Hello friends, this is Rudra and you are watching the Sudrishyam. Today I am making a video on a book review and the book is this Oliver Twist by Charles Dickens. So this is a translated version of the English book Oliver Twist, but don't worry, this video is going to be in English. But if you want in other languages like English or Hindi, you can comment me. Okay. So what is Oliver Twist? It is a novel, a small novel written by Charles Dickens. He is Charles Dickens. Now, who is Charles Dickens? Charles Dickens is the most famous English writer. He's so famous that after Shakespeare, the name most renowned is his, and he has written many great stories, great novels like David Copperfield, Oliver Twist, Great Expectation, A Tale of Two Cities, etc. So this is the story of a boy whose lives go through means this book shows that life is not flat, it is a roller coaster. Means there are many ups and downs, there are happiness and sadness, there are sufferings and pleasures, delights. Okay, and finally the boy gets what belongs to him. Okay, so without wasting any time, let us start. This book was actually I brought from a book fair. It has 77 pages in this Odia edition, and it cost me 60 rupees. With discount, it perhaps was of 50 rupees. Okay, so the story begins of Oliver Twist from an orphanage where a pregnant young lady was brought by some people. The lady gave rise to a baby, gave the baby a kiss and a locket, then she died. After that, the boy was brought up in the orphanage. The boy was named Oliver Twist. The name of the boy was Oliver Twist. He was placed in the orphanage. There 10 years spent. In that orphanage, the condition of the children was very petty. Means they had to do hard labor throughout the day, and they were only have to eat only one donlu for one spoon of portion. Okay, not more than that. But in festivals they get additional one chapati, a small chapati, not more than that. But they were they were working hard and they will get punished if they want more food. Children are working day and night, but they are having less food, so they get irritated. One day they decided someone of them will start asking for another bowl of food, another bowl of portion, and it was decided by them that Oliver Twist will ask that. During the eating, after eating the portion, fearfully, Oliver went to the servant and asked him, I am very hungry, kindly give me another spoon of portion. He was so angry. How dare you? He told, how dare you? And he told to the manager. The manager was a fat man named Mr. Bumble. He was very strict and very cruel. When he heard, what means he bite means Oliver was beaten by him, and he was locked in a room for 2 days. Then Bumble decided that Oliver will be sold to someone and will work there and will not stay in orphanage because he has broken the rule. So that happened. Mr. Bumble sold Oliver to a so Oliver was sold to a coffin maker, Mr. Thornberry. Mr. Thornberry had no children. He had a wife, and both don't know what is affection. They tortured Oliver, and there were two servants in the house of Mr. Thornberry. They also tortured him. In the first day, he was given some meat to eat, which was kept for the dog.
but Oliver was so hungry that he agreed to eat those. Then he was to sleep in the room where the coffins were there. He was a very young child, very small child. So he frightened if there are ghosts in the coffin, and he couldn't sleep there. In the morning, he was kicked and worked off by the servant. The servant always tried to hurt him, made him cry. But Oliver had a lot of patience, so he was not crying. But once the servant told his mother, means he told about the character of Oliver. He told her your mother is a woman of less character. She has no character. She is a bad woman. So he got anger. How can a boy bear his mother's mm, means something against his mother? So he started to fight with the servant. Then Mrs. Sorbery and other servant came and they all उसका धुलाई कर देते हैं, मतलब they Oliver was beaten by them and he was kept in a room. Then Mr. Bumble was brought. Mr. Bumble was called to means to frighten Oliver, but he was not frightened. Then it was decided that then Mr. Sorbery came. He also beat him. Then in the morning, when no one had woke up, Oliver decided that he will leave the home. He kept his clothes, a hat, and went on. From from the old keeper of their orphanage, he knew that London town or London city is a very big city, and there are more opportunities. There are a lot of opportunities of work, and no one sleeps in hunger. So he decided he will go to London. While walking on the road, he saw a milestone where there was written London is 70 miles. But there was no option for him. He was begging for food in the road, sleeping by the roadside, and was walking. He walked for 10 days and reached 60 miles. And in the dawn of a day, he couldn't walk. His feet were bleeding because a 10-year-old boy walking 60 miles for 10 days. That is not an easy task. So his feet bleeded. So he seated by a house, in the side of a house. So there was a tall boy who saw him and asked him, "What are you doing, brother? What is the trouble?" And Oliver told everything about him, and he told, "Do you want any job in London?" So Oliver agreed with him. So the boy gave him some food and take him to London, telling that there is a old gentleman. He takes care of orphans, and he will give you a certain job. So Oliver was happy and they went. But when they entered London, they went into a very very narrow row, and that was not hygienic. There was a very old house whose walls and roof was black. There he saw a old man cooking something and 3 or 4 children smoking. But they were affectionate to Oliver. They took care of Oliver. They gave him food and they gave him drink, alcohol. Although Oliver refused, but they forced him, drink, you will feel well. So he drank a glass of alcohol. Then he slept. Okay. Then Oliver woke up after 2 days due to the alcohol. Okay. So in the evening of that day, the old man, whose name was Foggins. So Foggins told that let Oliver know the play through which he can earn something. So Oliver was excited because he need to earn something.
So he was agreed to learn the game. So what the game was? The game was nothing but the game of pocket money, means of theft. Means Huggins kept something in his jacket pocket, and the two boys were means suspiciously went followed him, and very carefully they brought the thing from his pocket. Okay, but Oliver thought it's just a game. The next morning, Oliver was together with the two boys for the theft. They kept Oliver on the side of the road and went to a bookstore where a man was reading book. They targeted the man to steal from him. When Oliver saw that, Oliver realized that the game is nothing but the game of theft. So he immediately ran to escape from them. At that time, the two boys stolen the purse of the man who was reading the book, and the man, when he turned back, he saw that a boy was running. So he shouted, "Thief, thief, thief, thief!" So other people saw that a boy is running. So the boy must be the thief, and they followed him. Someone attacked Oliver on his head, so he fell down, and the police take him to the court. In the court, it was decided that the boy is a thief, and he is to be means imprisoned for 3 years. But at that time, the the bookstore, the books of owner came there and told that, no, your honor, this boy is innocent. He saw the theft and he ran away in fear. So by considering his evidence, they means released Oliver. But Oliver was means very weak, so he fall down in the way of the police station. So the man whose purse was theft, his name was Mr. Brownlow. He he had some pity for the child Oliver, and he kept him with him to his house. At his house, he took care of him with his missus, and Oliver got well soon. And Oliver had no mother and had never got such affections. So by their affection, he was very much delighted, and Oliver was very laborious. So by his activities, Mr. Brownlow and his wife also were very much attracted. So times went on. On the other side, Huggins was very much worried because he was a thief king, and if Oliver will Huggins was afraid that if Oliver will tell others that about their theft, they all may get into the jail. So he was searching him. Coincidentally, Mr. Brownlow gave Oliver some books and some money to give to the shopkeeper. But there, what happened? There, Oliver was on his way to this bookshop. There, some colleagues of the thief Huggins caught him and brought him to their adda, means brought him to Huggins again. There, Oliver was locked in a home again. And there, Mr. Brownlow thought that Oliver is a bad boy. Okay. First, Mr. Brownlow thought he is lost, so he gave some advertisement to finding him. But Mr. Bumble saw this report, saw this advertisement in the newspaper, and he came to Brownlow and told Oliver is a very bad boy. So the impression was bad in his mind about Oliver. So he did not find him again. In the other hand, there was someone, Mr. Monkos. Monkos is the main villain, perhaps. May not be, but he is a significant role here. Monkos he had a in his left cheek he had a red mark. Okay, he came to Huggins and told that destroy the character of Oliver, means let him be a thief or a dacoit, or let him be in jail, and I will give you 500 francs. So he will be given a lot of money. So Huggins was very greedy of money. So Huggins decided that he will
aid Oliver in a theft. So there was his colleague Bill Ficus and someone else. They were two dacoits. Uh, with them, Oliver was sent. Oliver was sent. So with the two dacoits, Oliver was sent to thief to a theft from a rich lady's house. When they arrived, Bill Ficus opened the window close to the stairs, and he let Oliver inside the room and told him to open the main gate so that the two can enter there. But when Oliver entered in the house, there were what? There were keepers. The keepers had guns they fired, and the bullet was heated. The bullet hit the arm of Oliver, and he fell down there. Will Ficus took him with him and ran away. But people were running behind them, so he could not carry Oliver, and he placed Oliver in a hole, means what they do, in a dump, गए गड्ढे में उसे फेंक दिया, मतलब रख लिया और उसका ओवरकोट उस पर डाल दिया. Then he ran away. Then there was a sudden wind, then rain. Oliver was not in. तब ओलिवर को होश नहीं था, लेकिन बारिश हुआ तो उसका सेंस आ गया, तो वो बहुत पेनफुली वहाँ से निकला, गड्ढे से निकला और भागा हेल्प के लिए. तो वहीं पहुँचा जहाँ से वो चोरी किए थे, तो उनके दरवाजे के पास जाके वो गिर गया. देन कुछ नहीं कर सका और दरवाज़ा खटखटाया, तो वो आवाज़ सुन के सर्वेंट्स के, एंड दे ओपन द डोर एंड दे सॉ दैट ए बॉय इज उसका हाथ में इंजरी हुआ है और वो गिरा है. तो वे उस घर के मालकिन को बुलाई और बोले ये शायद वो चोर था जिसको हमने गोली मारी है. तो वो जो है वो छोटा बच्चा था, इसलिए they decided to take care of the boy. They called the doctor, and then what happened, and now also means ब्राउनलो के घर के बाद इसके ज़िंदगी में फिर से अच्छी टाइम आ गया. मतलब वहाँ वो रिच लेडी ने और उनके पास एक उनकी रिलेटिव थी, जो दोनों ने. देन व्हाट हैपेंड, उनके घर में वो ओलिवर को मतलब अच्छे से रखे, वो उसका मासूम सा चेहरा देखे तो वो सोचे कि इनोसेंट है, और वाकई में ओलिवर इनोसेंट था और बहुत अच्छा था. तो उसे उन्होंने रखे घर में और उसका केयर लिया. तो क्या हुआ, एक बार उसे देख लिया हॉगिंस के कुछ लोगों ने उनके साथ, तो उसे वो भी देख लिया, तो उसे डर सताने लगा कि शायद हॉगिंस फिर से ले जाएगा उसे. और वो एक बार भी आया था, क्योंकि मंकस तो उससे पैसा देने वाला है ना, इसीलिए. तो इसके बीच फिर मंकस को पता चल रहा है कि वो मिस्टर बम्बल के वो ऑर्फनेज में रहता था ओलिवर. तो उन्हें बुलाया और उनको कुछ पैसा देके उनसे कुछ मतलब उसका वर्थ रिलेटेड थिंग्स को पता किया. और उस लॉकेट जो उसकी मॉम ने, ओलिवर की मॉम ने उसके जन्म के वक्त ओलिवर को दिया था, उस लॉकेट को मिस्टर बम्बल से ले गया. उसके अंदर एक रिंग था जिसके ऊपर उसका मॉम का नाम लिखा था. ओके, सो उस रिंग के ऊपर आग्नेस लिखा था, जो एक्चुअली में मतलब ओलिवर का मॉम का नाम था. तो उस रिंग को वो ले गया और वो लॉकेट को टेम्स रिवर में फेंक लिया. कौन? मंकस. उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब नांसी मतलब नांसी भी हॉगिंस का ग्रुप का एक लेडी था जो बिल साइकस को प्यार करती थी, इसीलिए वो उनके साथ रहती थी और उनके चोरी में भी काम की थी. और जब ब्राउनलो के पास हमारा ओलिवर था तब भी उसे पकड़ के लेने वाली नांसी थी, लेकिन नांसी हमेशा से ओलिवर का हेल्प करने के लिए. सो वो मंकस और हॉगिंस के बाद एक दिन छुप के सुनी, तो उसे पता चला कि ओलिवर को पकड़ के उसको जेल में रख लेने का योजना बना रहे हैं
मंकस एंड फगेंस। सो वो तो जानती थी ओलिवर कहाँ पे रहता है, तो दौड़ के गई और मिसेस रोज नाम का एक लड़की, जो कि वो रिच लेडी के साथ रहती थी जहाँ पे ओलिवर रहता था, तो मिस रोज को पास जाके सब बोल देती है कि यही योजना है, तो आप काइंडली ओलिवर का ख्याल रखिए। सो हियर फिर क्या होता है कि ओलिवर को मिस्टर ब्राउनलो का न्यू एड्रेस पता चल जाता है, और मिस्टर ब्राउनलो के वहाँ जाके मिस रोज एंड वो ओलिवर उनके साथ बातचीत करते हैं ब्राउनलो के साथ। ब्राउनलो ओलिवर के हकीकत को जानता से वाकिफ होता है और फिर से उनका कनेक्शन अच्छा बन जाता है। तो मिस रोज इस बारे में, मतलब ओलिवर के लाइफ को खतरा है ये जान के, इस बारे में डिस्कशन करने के लिए मिस्टर ब्राउनलो के वहाँ जाता है। तो मिस्टर ब्राउनलो, द डॉक्टर, द लॉयर, मिस रोज, they made a committee, they made a group in which they will protect protect Oliver. But Oliver was unknown about these all things. In this side, Bill Ficus was सो इस तरह वो जो कमेटी बनता है उसमें नैन्सी को भी रखने के लिए वो चाहते हैं। तो नैन्सी बोलती है वो सिर्फ संडे नाइट्स को आ सकती है और उनसे मिल सकती है, और उसे बहुत प्रपोजल दिया गया है कि तुम उसे छोड़ लो और हमारे साथ रह लो, वो चोरों को छोड़ लो। लेकिन वो मना करती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, बिल साइकस को। तो इसमें नैन्सी का कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, मतलब वो जैसे भी हो लेकिन अपनी मोहब्बत के साथ हर कंडीशन में रहने के लिए एग्री है। तो इस तरफ साइकस का तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है वो चोरी के बाद, तो फगिन्स उसे मीट करने आता है। तो फिर एक संडे आता है, तो नैन्सी सोचती है मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, लेकिन साइकस उसे जाने नहीं देती, उसे मारता है और एक रूम में लॉक कर लेता है। तो इस तरह फगिन्स सोचता है शायद ये नैन्सी किसी से चोरी चोरी मिल रही है तो ये शायद हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो वो क्या करता है, एक बच्चे को नैन्सी के पीछे लगा लेता है, मतलब वो कहीं कब कहाँ जा रही है उसे देखो। तो नेक्स्ट संडे क्या होता है, साइकस तो उसे जाने नहीं दे रही थी, तो जाने नहीं दे रहा था, तो वो क्या करती है, नैन्सी उसका ड्रिंक्स में कुछ नशीली दवाई मिला लेती है जिससे साइकस सो जाता है। तो उसको सुला देने के बाद नैन्सी जाती है और लंदन ब्रिज के पास हुए ब्राउनलो और मिस रोज से मिलती है। इधर फॉगिन्स का भेजा हुआ लड़का छिप छिप के सारे बातें सुनता है। तो नैन्सी को वे ऑफर करते हैं कि तुम उन्हें छोड़ लो और हमारे साथ रह जाओ, हम तुम्हें दूसरे कंट्री में भी भेज सकते हैं, तुम वहाँ से फ्रीडम से रहना। लेकिन वो मना करती है, नहीं मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, पर मैं पिछले संडे नहीं आ पाया था क्योंकि मुझे नहीं आने दे रहे थे, तो आज मैं उसके ड्रिंक्स में कुछ नशीली दवाई मिला दिया हूँ और फिर आ गया हो गया। तो ये बातचीत ख़त्म कर लेते हैं और वो बोलता है कि वो मंकस है जो कि ओलिवर का लाइफ स्पॉइल करना चाहता है, और उसको आप पहचान सकते हैं, उसका चिक मतलब क्या है ये, लेफ्ट चिक में एक रेड मार्क है, उसे पहचान सकते हैं। तो ब्राउनलो समझ के कि वो किसके बात बोल रही है, सो ही टोल्ड वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, और फिर वे सब निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि नैन्सी घर वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, वो फगिन्स के पास वो लड़का आके सब कुछ बता देता है नैन्सी के बारे में। तो ये तो मतलब उसका दिमाग गर्म हो जाता है फगिन्स का कि क्या करें, क्या किया जाए, ये तो सब डिटेल्स बता दी गई है, तो शायद हम भी पकड़ा जाएंगे। लेकिन ब्राउनलो नैन्सी को वादा आता है कि मैं सिर्फ ओलिवर को बचाऊंगा और किसी को कुछ नहीं होगा। पर इस बात को वो फगिन्स और साइकस को बता देता है कि वो तुम्हारा ड्रिंक में कुछ मिला के, मतलब नशीली चीज़ें मिलाई थी और तुम्हें बेहोश करके मिलने जाई थी। तो ये बात सुन के साइकस बहुत गुस्सा हो गया और आज साली को मार दूंगा, ऐसा सोच के
घर में घुस गया, नानसी के गला दबा के उसको बीच में लाया, रूम के बीच में ले आया और उसको गोली ही मारने वाला था, लेकिन उसको शक हुआ कि अगर गोली मारूंगा तो साउंड से लोगों को पता चल जाएगा। तो उसका गला दबाया और गन को घुमा के उसके पीछे के हिस्से से उसके सर में पीटा। नानसी वो बहुत चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, जो बोलोगे मैं करूँगा। लेकिन वो कुछ नहीं माना, उसे पीट पीट के मार दिया। घर चट्टान में ब्लड ही ब्लड हो गया। लेकिन उसका आंखें बड़ी बड़ी करके वो मर गई नानसी। लेकिन उसका वो बड़ी आंखें साइकोस को ऐसा लगा कि उसको हमेशा पीछा कर रही है। तो वो क्या किया, अपने कपड़े से वो सारे स्पॉट को, मतलब ब्लड स्पॉट को साफ कर दिया, रूम को साफ करके और नानसी के बॉडी को साइड में रख लिया और घर से निकल गया उसका कुत्ते के साथ। लेकिन उसको हमेशा लग रहा था कि शायद नानसी का आंखें उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो घूम घूम के रात में पहुंचा एक मंदिर पे। वहाँ पे वो बैठा था तो उसे लगा शायद ये लोग भी मेरा पीछा करेंगे, तो वहाँ से भी वो निकल के चला आया। लेकिन उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था। इधर पुलिस वाकिफ हो गया था कि नानसी की मौत हो गई है और साइकिल से मारा है। तो उसको ढूंढ रहा था पुलिस। तो वो आसपास के लोगों से साइकिल ने सुना कि उसे पुलिस ढूंढ रहे हैं। तो ये और भी फ्राइटन हो गया और फिर सोचा कि वो अपना पुराना अड्डा में चला जाएगा। तो फिर वो टेम्स रिवर के पास उनका एक अड्डा था, वहाँ पे चला गया। वहाँ पे चले जाने के बाद वहाँ पे जो लड़के थे, वहाँ पे वो फगेंस का कुछ लोग भी थे। वो बच्चा भी शामिल था जो नानसी के बारे में फगेंस को बोला था। तो बोला तू हमसे दूर हो जा, अगर मुझे पता होता कि तू नानसी को मार देगा तो मैं नानसी के बारे में फगेंस को कभी नहीं बताता। तो फिर वो परेशान होकर तुझे भी मार दूंगा बोल के उसको गला दबाने के लिए आ गया था। तब बाकियों ने उसे छुड़ा लिया। तो फिर बाहर पुलिस और जनता आ गई थी कि वी विल किल साइकस बिकॉज ही इज ए विल। वो बहुत ही बुरा काम किया है, बहुत निर्दय भाव से कत्ल कर दिया है नानसी का। तो वो सोचा कि वो छत के ऊपर चला गया और सोचा मैं टेम्स रिवर में कूद छलांग लगा लूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा, तैर के पार हो जाऊँगा। और वो क्या किया, एक फंदा लगाया वहाँ, मतलब सीढ़ी पे छत के ऊपर एक खंभा था, खंभे पे फंदा लगाया और दूसरा फंदा का उन्हें बॉडी पे लगाने वाला था। तब जब गर्दन तक लाया था वो फंदा को, तब उसको रियलाइज हुआ कि नानसी की आंखें आ गई है और नानसी बोल रही है तू कहाँ जाएगा बच के। तो वो सारे हिम्मत खो बैठा, अपना संतुलन खो बैठा और हाथ छोड़ दिया। तभी फंदा गले में अटक गया और वो गिर गया और लटक के मर ही गया। वहाँ वो मर गया और उसका कुत्ता उससे बचाने के चक्कर में छलांग लगाया और वो भी टेम्स रिवर में कूद के मर गया। तो ये विलेन का एंड हो गया। इधर मिस्टर ब्राउनलो कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ मोंकस को घर में ले आए और उससे पूछताछ की और बोले तुम एक्चुअली मोंकस कौन था। मोंकस मिस्टर ब्राउनलो का दोस्त का बेटा था। तो इसीलिए बोला मैं तुम्हें पुलिस में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुम अगर मुझे सच सच बोलोगे और मेरे कंडीशन में एग्री हो गया तो, वरना बहुत बुरा होगा। तो फिर वो सब सच बोलता है और यह भी पता चलता है कि मोंकस और ओलिवर सौतेले भाई हैं। मतलब क्या होता है, मोंकस का पापा मतलब ओलिवर का जो माँ, मतलब उनका नाम क्या है था, क्या था वो नाम, हाँ, सो उसका मम का नाम था आग्नेस। सो मोंकस का फादर आग्नेस को प्यार करते थे और उससे शादी करने वाले थे, लेकिन उनका एक बच्चा भी होने वाला था। तभी उनको ग्रीस जाना पड़ा कुछ काम से, उनका रिलेटिव का देहांत हो जाने से। तो जब वो गए थे तो वो आ ही नहीं पाए। लेकिन ब्राउनलो से उनका बातचीत हुआ था। ब्राउनलो को वो बोले थे कि आग्नेस का जो बेटा होगा मोंकस और उसके बीच में मेरे सारे जायदाद को 2 हिस्से में भाग कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरा बच्चा का कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, वो कोई बुरा आदमी होगा, एंटी सोशल होगा, तो वो सारे संपत्ति को मोंकस ही पा जाएगा। इसीलिए मोंकस प्लान कर रहा था कि कैसे भी करके
हाँ, ओलिवर एक चोर बन जाए तो उसका कैरेक्टर लॉस हो गया तो सारे संपत्ति वो पा जाएगा। लेकिन ब्राउनलो के होते हुए ऐसा नहीं हो पाया, तो ब्राउनलो ने उसे बोला कि सारे जायदाद 2 हिस्सों में बटेगा, तुम्हारा हिस्सा तुम पाओगे, ओलिवर का हिस्सा तो वो पाएगा, और तुम्हें कोई जेल में नहीं लेगा, तुम विदेश चले जाओ। तो ठीक है, वो फिर उससे कलेक्ट कर लेते हैं हगिन्स का ठिकाना। हगिन्स के ठिकाना नांसी का मृत्यु हो गया था, इसलिए उसको दिए हुए बाधा भी क्यों रखें, क्योंकि उन्होंने उसको मार भी दिया था। इसलिए हगिन्स को के अड्डा के बारे में पुलिस को बता दिया ब्राउनलो ने, और फिर पुलिस ने जाके हगिन्स के अड्डा को कैद कर लिया और उन्हें पकड़ लिया। और फिर यहाँ वो कौन मंकस वो विदेश चला गया, लेकिन जो पैसा था उसको, मतलब चोर ही था, मतलब उसको काम करने का आदत नहीं थी, तो सारे पैसे को ऐशो आराम में उड़ा दिया और फिर से वो पुअर हो गया और फिर कुछ एंटी सोशल वर्क्स करके गिरफ्तार हुआ। इधर मिस रोज को वो रिच लेडी का बेटा के साथ मैरिज करवा दिया गया, और हमारा ओलिवर जो पैदाइशी दुखी था, उसका जीवन में अभी स्वर्ग का आनंद आ गया। मिस्टर ब्राउनलो उसको अपना बेटा बना के रख लिए और सारे जायदाद भी ओलिवर को मिला। अब ओलिवर आराम से रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। मैं उसका रिव्यू देने वाला था, लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट समरी भी दे दिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, आप मस्ट पढ़िए। मैं कुछ हिस्सों को छोड़ा हूँ क्योंकि आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब एक बच्चे का लाइफ का स्टोरी है, कैसे उसने स्ट्रगल किया और कैसे हार नहीं होना। लक तो मिलेगा, उसके साथ हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये किताब हमें सिखाता है। तो मतलब एक मुहावरा है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स, मतलब किस्मत उनका साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं और जो हिम्मत नहीं आते और मेहनत करते हैं। तो ये लड़का मेहनत किया, सोचिए 70 माइल्स इसने चल के गया है, कितना पेशेंस था इसका, कितने गाली कितने मार सहे हैं, हिम्मत नहीं हारा है अपनी ज़िंदगी से, और इसका लाइफ में अंत में भला ही हो जाता है। तो जैसे कि शाहरुख खान बोलते हैं, हमारा लाइफ भी बॉलीवुड की तरह है, हैप्पीस्ट एंडिंग्स ही होता है, और अगर ये एंडिंग हैप्पी नहीं है तो ये एंडिंग ही नहीं है। सो आई होप ये किताब आपको अच्छा लगे। तो कैसा लगा आप फीडबैक देना। मैं कम्प्लीटली इंग्लिश में बोलना चाहता था, लेकिन इट्स माई फर्स्ट रिव्यू वीडियो, सो थोड़ा हिंदी इंटरफेयर हो गया, तो कुछ गलती हुआ है तो माफ़ करते ना। वी विल इम्प्रोवाइज, आगे हम इम्प्रोवाइज करेंगे, वी विल इम्प्रोवाइज अगेन नेक्स्ट। सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक and thanks for watching. So we'll meet again with a new video with a new book. So till then, bye bye, take care, we'll meet.